So hello everyone, good evening. Hope you all are doing well. So I have invited my guest. How have you all been? I've been terribly under the weather. I know my voice is like changed, but then this is a session which was planned earlier, and I really didn't want to change it. So uh, so today's session is something which I'm very excited about. Why? Uh, it's something which is extremely important for people with endometriosis, because there is a lot of confusion about this particular topic when it comes to endometriosis. Hi, Dr. Sharayu. Hi. Okay now. I hope there is no issue. Yes, it all looks fine. I'm just adjusting my video. So, how have you been? Yeah, I'm good. I'm so much. You're good. Thank you so much for giving this opportunity and have a discussion regarding this very important topic regarding how endometriosis can affect fertility. I swear this is something which is extremely important. So before I start the discussion, I would first want to introduce myself for people who don't know me. I'm Dr. Shilpa. I'm a dentist by profession and an endometriosis advocate by passion. And EndoStrong is my baby from this passion. And the guest today is super special, and she's Dr. Sharayu Mohite, and she is going to be talking about fertility issues when it comes to endometriosis. So, Dr. Sharayu, welcome on our EndoStrong platform. Yeah, thank you so much. I must thankful Dr. Shilpa, and let me introduce her because she is the person who knows very well about endometriosis, and I must congratulate her because she is taking a lot of efforts to make people aware about how this endometriosis is actually going to be very difficult to fight with, but it all about you should know about your disease, then you can have a better outcome. So I really appreciate what you're taking, and thank you so much. No, thank you so much. And Dr. Sharayu, thank you for all the support. I mean, the way you have supported right from our offline programs to our discussion today. I think doctors like you and the others who have been supporting us, I think that really matters, because that's where the patients would come to at the end of the day, you know. Absolutely. So, a brief introduction about Dr. Sharayu. So she is a fertility consultant at Jehangir IVF Pune and at Novo Solitaire Care at Pune itself. So she has done her fellowship in reproductive medicine and diploma in reproductive medicine as well. She is an international faculty of IVF courses at IBC Dubai. Oh my God, that's like amazing, huh? So how often do you travel to Dubai? It's been in a year 2 times, it's every 6 months we conduct the course basically. That must be like interesting, training so many people out there. Doctors comes, and it's very good interaction with them because every ethnicity is different and unka problem alag alag rehta hai, so it's very interactive. We learn. True. Yeah. So today we are going to be shedding light on the impact of endometriosis on reproductive health. We'll discuss some common challenges which are showcased, and we'll also explore the potential solutions that will help you with the fertility. So if you are somebody who's looking for answers for these questions, please stay tuned till the end, because we have a long list of questions for Dr. Sharayu. And let's just break down the barriers and start a conversation. So the first question, Dr. Sharayu, for you is, how does endometriosis impact fertility? Yeah, so basically out of whatever infertile couple we see, out of them 30% may have endometriosis. That is the highest incidence which we can quote. And endometriosis is a basically a pathology. मतलब क्या होता है कि यूट्रस में जो भी नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, why couple face infertility? Because normally every menses के टाइम पे by day 12-13 पे एक फॉर्म होता है, उसका ओवुलेशन होता है. When it ruptures and have intercourse during that time, तभी either you get, otherwise आपको 15 days के बाद menses आता है. तो ये है वो नॉर्मली होना चाहिए.
बट बिकॉज इन एंडोमेट्रियोसिस जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग रहता है एंडोमेट्रियम, तो बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस में क्या रहता है, द टिश्यू विच इज आउटसाइड द यूट्रस, which is not an endometrium but it behaves as a endometrium, and जो भी मंथली जो हॉर्मोन्स प्ले करते हैं बॉडी में, उसका जो इफेक्ट होता है वो नॉर्मली एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे शेड होता है, तो एवरी मंथ मेंसेस के टाइम पे वो ब्लीडिंग होके वो एंडोमेट्रियम बाहर आ जाता है. बट सैडली इन एंडोमेट्रियोसिस ये जो एक्टोपिक टिश्यू है वो वहां पे मतलब आउटसाइड द यूट्रस जो डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन सेट होता है दैट इज ऑन ओवरी, जहाँ से एग्स फॉर्म होते हैं, एंड इट कुड बी ऑन द ट्यूब्स ऑल्सो, एंड इट कुड बी बिलो द यूट्रस. मतलब वो बहुत सारे मतलब वहाँ पे जगह है, बहुत सारे एरियाज है आउटसाइड द यूट्रस, ट्यूब्स रहता है, ओवरीज रहता है, अब मतलब जो यूट्रस के आगे वाला जो पोर्शन रहता है जहाँ पे ब्लैडर है, या फिर पीछे वाला जो पोर्शन है जहाँ से मोशन पास होता है, ये जो है यहाँ पे अगर वो एंडोमेट्रियोसिस से डिपॉजिट हो गए देन इट मे अफेक्ट द इनफर्टिलिटी. सो बेसिकली इट इज अ डिसीज विच इज नॉट अलाउिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी टू टेक प्लेस, एंड इसीलिए ये प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई पीपल फेस इशू, एंड मैक्सिमम ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी करके आते हैं. लेकिन दोस कपल हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्शन, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं यूट्रस नॉर्मल होना चाहिए, ट्यूब नॉर्मल होना चाहिए, ओवरीज का फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए, देन यू कैन कंसीव. तो अगर उनको इवेल्युएट करते तो सब नॉर्मल होता है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव. तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल विथ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कैन हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली. I get that. Also, I think another factor which I can probably say is the painful intercourse that happens. I think उसके वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम होता होगा, right? So basically, few people come to us with the problem of sexual dysfunction, and where there could be a problem of having difficulty in intercourse. So because जैसे मैंने बोला कि एंडोमेट्रियोसिस का डिपॉजिट यूट्रस के अराउंड कहीं पे भी हो सकता है, एंड अगर वो डिपॉजिट है वो मतलब यूट्रस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर रहता है, या फिर जहाँ पे यूट्रस जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट से टाई हुआ रहता है, अगर वहाँ डिपॉजिट होता है तो ये सब वजाना के अराउंड रहता है. सो दैट एंडोमेट्रियोसिस की वजह से वजानल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, एंड जो इन्फ्लेमेशन सेट्स उसकी वजह से they will be having a painful intercourse, and that's why they are not able to intercourse very properly. So many times, like if at all I have to tell you in briefly to summarize this thing. First of all, we see patient with infertility with the physical symptoms as we discussed now, with the having a difficulty during intercourse. Second thing, where they have come to us with unexplained infertility and we suspect that they can have endometriosis. Third thing, they will be having a menstrual pain like dysmenorrhea, मीन्स वो ट्राइफेजिक रहेगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर लेडी में वो ट्राइफेजिक रहेगा. ट्राइफेजिक मीन्स बिफोर गेटिंग योर मेंसेस 3-4 डेज पहले स्टार्ट होता है, देन वंस यू गेट योर मेंसेस नेक्स्ट 2 और 3rd डे पे उसका पेन कम हो जाता है. सो दैट इज ट्राइफेजिक डिस्मेनोरिया. समटाइम्स like the lady can come with these symptoms, and they are having dyspareunia also, and with unexplained infertility, as I said, there can be having difficulties when we are doing them, and sometimes when we are doing their ultrasound as to complete our evaluation infertility, जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं पेल्विस का, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी गिव्स अ प्रॉपर आइडिया. वहाँ पे हम लोग को समझ में आता है, बट दैट इज ऑफ कोर्स अ इन्वेस्टिगेशन, बट सिम्टम्स आर व्हाट आई डिस्कस विद यू, दैट कुड बी द सिम्टम्स वेयर द कपल आर एक्चुअली कमिंग विद इनफर्टिलिटी. Makes sense. So with respect to reproductive function, the fertility, so how is endometriosis diagnosed? I mean, laparoscopy I understand, but is there any other way also जो आपका when it comes to fertility issues, और कोई तरीका भी है क्या जिससे पता लगता है? Yeah, so let's talk one by one. मतलब पहले तो जैसे मैंने बोला, if the lady is telling that she is having difficulty in having intercourse, okay, तो वो एक suspicion रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल gynecologist should not forget to do her per-vaginal examination, clinical examination if she is really active. तो उसमें क्लिनिकली एग्जामिनेशन में हम लोग को समझ में आता है कि मतलब जो नोड्यूल लगता है, सो एंडोमेट्रियोसिस का डिपॉजिट है, जैसे फाइब्रोसिस रहता है, डूइंग एन एग्जामिनेशन टू नो कि यहाँ पे फाइब्रोटिक बैंड है.
जब हम लोग वो यूट्रस को मूव करते हैं तभी उनको पेन होता है। एंड परवजाइनल एक्सपेंशन में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम हम लोग को समझ में आता है कि दे मे हैव अ डिफिकल्ट इंटरकोर्स एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे, जहाँ पे उनको एंडोमेट्रियोसिस का डिपॉजिट है वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। सो ये क्लिनिकल इवैल्यूएशन। सेकेंड इवैल्यूएशन इज अबाउट ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, or otherwise if it is unmarried we have to do transabdominal sonography also. Transvaginal sonography with 3D ultrasound gives a better picture. तो उसमें कैसा है, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस के बहुत सारे टाइप्स है। The common is affected in endometriosis is ovary। तो उसमें ओवरी बहुत जल्दी समझ में आता है, अगर ये एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू ओवरी में है तो उसका सिस्ट बन जाता है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। एंड उसका जो सोनोग्राफी के टिपिकल पिक्चर रहता है दैट इज डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर ओवेरियन सिस्ट, जहाँ पे लो लेवल ऑफ इंटरनल इकोज रहता है। एंड विद स्किलफुल सोनोग्राफी वी कम टू नो कि हाँ एंडोमेट्रियोसिस ही है, तो वो ओवरी में समझ में आता है कि एंडोमेट्रियोमा है। सेकेंड थिंग है कि जब हम लोग वो सोनोग्राफी को मतलब सोनोग्राफी प्रोब को जब हम लोग उसका मूवमेंट करते हैं तभी टेंडरनेस समझ में आ जाता है वो प्रोब के यहाँ पे। एंड कभी कभी जो ओवरी है वो यूट्रस के बाजू में चिपक जाती है बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियोटिक एडेजेंस, बिकॉज वी ऑलवेज कॉल एंडोमेट्रियोसिस एज अ बिनाइन मैलिग्नेंसी। मतलब ऐसे लगता है ये डिसीज है, वो डेफिनेटली कैंसर नहीं है, बट इट इज सच अ पेनफुल एंड रिकरेंट डिसीज है। जैसे कैंसर कैसे रिकरेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं कैंसर में, ऐसे कंप्लीट ट्रीटमेंट होने का क्वेश्चन मतलब बहुत कम चांसेस रहता है, वैसे ही एंडोमेट्रियोसिस कैंसर नहीं है, बट बिकॉज ये टिश्यू स्प्रेड हुआ जाता है, जैसे मैंने ओवरी का बोला, वैसे यूट्रस के पीछे वाले हिस्से पे एंडोमेट्रियोसिस रहता है तो सोनोग्राफी पे समझ में आता है कि यहाँ पे नोड्यूल है। सेकेंड थिंग, ब्लैडर में कुछ डिपॉजिट्स है तो वहां पे भी शैडो आ जाते हैं। कभी कभी की वजह से ट्यूब थिकन हुआ रहता है, मतलब बिकॉज वो एंडोमेट्रियोमा का जो मतलब जो फ्लूइड है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड दैट गिव्स राइज टू हेमाटोसैल्पिंग्स, वो समझ में आता है सोनोग्राफी पे। या कभी कभी जैसे मैंने बोला कि ओवरी अडेरेंट होती है यूट्रस पे तो वो भी समझ में आता है। तो 3D अल्ट्रासाउंड इज वन ऑफ द वे टू डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो एंडोमेट्रियोसिस का एक्सटेंट नहीं पता चलता, when we do 3D sonography, then in that case we have to go for MRI. MRI gives a proper grading. So grading means whether it's grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 endometriosis. Grade 1 और grade 2 MRI, grade 1 endometriosis जो है जहाँ पे सिर्फ superficial deposits रहते हैं। पहले एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता था कि जहाँ पे ब्राउन डिपॉजिट्स है वही एंडोमेट्रियोसिस है, नहीं, एंडोमेट्रियोसिस कम्स इन डिफरेंट पिक्चर। वो व्हाइट में भी पिंक भी रहता है, ब्राउन डिपॉजिट भी रहते हैं, बट दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज इवन ऑन MRI, okay, which can be diagnosed on laparoscopy. But the grading of endometriosis, we start from grade 2, 3 and 4. That definitely very well will be diagnosed on MRI. And जहाँ पे समझ में आता है what kind of a treatment we should offer to a client. So these are the modalities how we can diagnose endometriosis apart from our laparoscopy, which is a diagnostic laparoscopy, if at all we have to do for unexplained infertility cases. That's pretty explanative. So now, if somebody is looking for conception, so what are some potential treatments that are recommended for a patient with endometriosis? Actually, endometriosis is a disease which is starts like there are various ages which we come across for endometriosis. Sometimes very sadly we come across a girl with 20 to 25 years with endometriosis, or sometimes they have completed the family and then they are coming they have already a first baby and then they are coming to us with secondary infertility. There are different variety of people we come across, and how we are looking, it has to be a holistic approach. It's very difficult to give a blanket treatment for all endometriosis girls with the same approach, because to give an example, because I think example देने से थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं. Let's say I have a girl who is young, who is of 25 to 30 years, and जिनका एंटी-मुलेरियन हार्मोन मतलब एक प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, and she is coming with endometriosis, जिनको हम लोग को दिख रहा है कि ओवरी में एंडोमेट्रियोमा है, तो उनमें अगर हम लोग वो एंडोमेट्रियोमा बाहर निकालते हैं बिकॉज उनका एक प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अच्छा है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी विल बी द बेस्ट आउटकम फॉर हर फर्टिलिटी, जहाँ पे हम लोग ये जो
वो पूरा निकालते हैं एंड वहां पे समझ में आता है कि सिर्फ ओवरी में एंडोमेट्रियम नहीं है, उसके आजू बाजू भी डिपॉजिट्स है। तो कभी कभी ट्यूब और ओवरी का जो एनाटॉमी प्रॉपर होना चाहिए वो भी डिस्टर्ब हुआ रहता है, तो वो लैप्रोस्कोपी में सॉल्व हो जाता है। एंड we evaluate tube also, and we after the surgery they have better chance of having spontaneous conception. तो we have many examples, मतलब लास्ट एक साल में मेरे पास 3 ऐसे कपल्स है जहाँ पे उनको एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी होने के बाद आफ्टर 3 months they got spontaneously conceived. Okay, so it's nothing that एंडोमेट्रियोमा में हमेशा ही आपको इन्फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के द्वारा ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर दोस्त मैंने बोला कि अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी है जिनका मतलब जो ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस इवन एमआरआई पे भी नहीं समझ में आता, उनको हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं कि जहाँ पे अगर उनको इंटरकोर्स के लिए प्रॉब्लम है तो आईवीआर के जैसा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहाँ पे हम लोगों का मतलब जहाँ पे उनको ड्रग्स दिए जाते हैं टू फॉर्म एन एग एंड वहाँ पे हस्बैंड का सैंपल लेके वो प्रोसेस करके डायरेक्टली उनके यूट्रस में छोड़ा जाता है। सो वेयर दे आर नॉट एबल टू बट वहाँ पे हम लोग वो उनका वो ओवरकम कर रहे हैं, उनका जो सेक्सुअल इनएडिक्ट है वो प्रॉब्लम को ओवरकम करके वी आर गिविंग देम चांस। बट वहाँ पे हम लोग पहले ये जज करते हैं कि उनका ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है ना, वो कंफर्म करना। कभी कभी ऐसे कपल में जब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग ओवुलेशन का इंजेक्शन तो दे रहे हैं लेकिन उनका वो रप्चर नहीं हो रहा है तो देयर कुड बी सम डिपॉजिट्स ऑन द ओवरी, जिसकी वजह से द फॉलिकल इज नॉट अलाउइंग टू रप्चर एंड उसके फिर उन लोगों में हम लोग को डायरेक्ट करना पड़ता है कि नहीं, हम लोग पहले सर्जरी करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो इवेल्युएट करेंगे एंड देन डिपेंडिंग ऑन कि कितना वो प्रॉब्लम है पेल्विस में, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट फर्दर किया जाएगा उन लोगों को। एंड जैसे मैंने बोला कि कभी कभी दे जस्ट हैव एवरीथिंग इज नॉर्मल बट दे आर जस्ट हैविंग डिफिकल्टी इन इंटरकोर्स, जहाँ पे अगर जैसे मैंने बोला कि डिपॉजिट्स है वजाना के आजू बाजू या फिर यूट्रोसैक्रल में नोड्यूल्स है, तो लैप्रोस्कोपी में अगर वो क्लियर हो जाता है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सर्जन शुड बी वेरी स्किलफुल, बिकॉज ये जो है सिर्फ वो कॉटराइजेशन से या वो बर्निंग एंडोमेट्रियल डिपॉजिट से नहीं होता, वो पूरा उसका एब्लेशन, उसका एक्सीजन करना पड़ता है एंड देन वी हैव टू मेक द पेल्विस फ्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तब जाके उनका इंटरकोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देन दे हैव अ बेटर चांस ऑफ कंसेप्शन इवन इन नेचुरली। सो दीस आर अ सिंपल, obviously for some people we have to go for assisted reproductive technology because उनका एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत कम हुआ रहता है एंड लाइक यू नो इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी, जहाँ पे हम लोग होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। कभी कभी कैसे रहता है कि द गर्ल इज आल्सो सफरिंग फॉर एंडोमेट्रियोसिस बट हस्बैंड इज आल्सो हैविंग सम एब्नॉर्मलिटी, तो वहाँ पे हम लोगों को एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लाइक आईवीएफ, इक्सी, इसका मतलब सपोर्ट लेना पड़ता है टू गिव देम अ बेटर ट्रीटमेंट। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि द एंडोमेट्रियोसिस इज सो वास्ट, जहाँ पे उनका एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम आया है एंड उसकी वजह से हम उनको ऑप्शन देना पड़ता है कि यू गो फॉर आईवीएफ, जहाँ पे हम लोग उनका आउटकम इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू आईवीएफ। तो दीज आर डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ लाइक यू नो हैविंग कंसेप्शन विद IVF and obviously there are many like you know aspects. I think maybe if at all you ask you like you know subsequent questions उसमें कवर हो जाएगा या फिर बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि IVF में what all the possibilities which may face in endometriosis. Correct. नहीं, but this probably answers a very confusing question क्योंकि बहुत लोगों को ये confusion होता है, especially patients, कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले कराएं कि यू प्लान फॉर अ बेबी फर्स्ट, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और चीज बोलते हैं, सो एट द एंड ऑफ इट पेशेंट्स आर लाइक सुपर कंफ्यूज्ड। सो आई थिंक दिस क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ दैट डाउट दैट सर्जरी to a large extent, in a large extent of people, is suggested before you go for a assisted reproductive technique. If at all you feel that there are some parameters which you feel may affect the egg, the AMH, probably then you do the, ART first, right? Yeah, absolutely. And that was like really important. So, what is the correlation between endometriosis and the ovarian reserve? I mean, does endometriosis affect the quality of the egg or the quantity of the eggs that are produced? Yeah, so the endometriosis definitely affects the quantity of the egg. Okay, so to give an example, I will quote a study here. यहाँ पे एक एरर स्टडी किया गया जहाँ पे उन्होंने
endometriosis के girls का एक group लिया and other group is non-endometriotic girl and they followed both the group with AMH. मतलब एक साल के बाद दोनों भी ग्रुप में AMH किया गया. So they found that those who are having endometriosis, there is 26 times higher fall in the AMH, that is egg producing capacity, than with non-endometriotic group. So it is very important. That's quite a drastic percentage, huh? So it's very important aspect of fertility that endometriosis does affect your egg producing capacity. Means it affects quantity. The number definitely it affects because endometriosis का tissue है उसमें जो भी inflammation है that inflammation is not good for the egg. तो जैसे हम लोग को पता है कि we born with many number of eggs, बट जैसे जैसे हम लोगों का प्यूबर्टी आता है, जैसे जैसे हम लोग 45 के एज की तरफ जाते हैं तब एक नंबर कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग को मेंसेस मतलब मेंसेस बंद हो जाते हैं. दैट इज अ नेचुरल फुटफॉल फॉर एवरी लेडी. बट एंडोमेट्रियोसिस जो एट्रेसिया है, मतलब जो नेचुरल डेथ होता है फॉलिकल्स का, वो बहुत एग्रेसिवली हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. इसीलिए मतलब कोई लड़की का अगर 4 AMH है तो नॉट सरप्राइज कि आफ्टर 1 ईयर उसका 1 AMH है, मतलब विद इन 1 ईयर बहुत ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है कंपेयर टू अदर गर्ल्स. सो दैट इज वन important thing which we should always remember. That is why a girl, young girl who is suffering for endometriosis, we counsel them that look, this is the possibility that your egg number is going to come down because of the endometriosis tissue. But a very good question you ask about the quality of the eggs, because previously whatever the data was being published in our literature, मतलब reproductive medicine में जो भी पता चला था उसमें ऐसा मेंशन किया था कि क्वांटिटी तो अफेक्ट करता है बट क्वालिटी ऑफ एग आल्सो सफर इन एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, बट जैसे जैसे I lost you. Yeah. तो रिसेंट गाइडलाइंस है इनफर्टिलिटी का जहाँ पे उन्होंने IVF के पेशेंट्स का एक क्वालिटी कंपेयर किया विथ नॉन एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स. तो उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 पेशेंट्स का डेटा निकाला है एंड उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट द क्वांटिटी बट इट डजंट अफेक्ट द क्वालिटी. द क्वालिटी ऑफ द एग इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द लेडी एंड द FSH फॉलिकल हार्मोन ऑफ द लेडी. ओके, एंड इफ शी इज हैविंग सम एसोसिएटेड डिसऑर्डर तो उसका क्वालिटी अफेक्ट होता है. बट एज पर से एंडोमेट्रियोसिस डजंट अफेक्ट क्वालिटी, इट अफेक्ट्स ओनली क्वांटिटी ऑफ द एग. That's a respite for a lot of patients who would be watching this or who are watching this. There is some kind of a positivity that probably this study just got in. Absolutely, because that's the $1 million question. And till 2017, all the papers were mentioning it affects quality, it affects embryo quality. But no, now the European guideline mention it doesn't affect egg quality. That is being proven by the science. And is there a difference between the success rate of ART with women having endometriosis? Yeah, definitely. As I said that endometriosis affects the quantity of the egg, and when it comes to infertility, it's all about the number of the egg which may matter. मतलब quality तो matter होता ही है, but quantity also matters. तो इसीलिए embryo quality and egg quality suffer नहीं होता है, but the amount of embryos which are generated उनका quantity कम हो जाता है, and उसकी वजह से that decrease the success rate. To give an example, a girl with endometriosis may be having a success rate of 30 to 40%, and those without endometriosis will be having success rate of 60 to 70% in IVF or ICSI cases. Okay, but it doesn't affect the embryo per se. मतलब अगर किसी को endometriosis है और उनका conception हो जाता है, if they have a good successful pregnancy, तो embryo quality में वो baby में कुछ भी defect नहीं आता है with the fact that she is having endometriosis. Okay, but definitely if we look at the success rate, it is lower in endometriosis group compared to the non-endometriosis. So, Dr. Sharayu, is it lower because of the factors like the inflammation that is higher in the body? Yeah, so there are two aspects of it. First of all, I would like to again quote one study which was done in Australia, and वहाँ पे
ने बोला गया कि एंडोमेट्रियोसिस को डिटेक्ट होने के लिए या उसका सिम्टम्स आने के लिए इट टेक्स 8 years. Okay. Right. So to have that painful condition, it may take 8 years where you are already suffered and you are not aware of it. Correct. इसीलिए couples which we see are with endometriosis where they are married for more than 8 to 10 years, where like they are not having any other trouble, but उनका एमएच कम है, डायग्नोसिस लैप्रोस्कोपी समझ में आता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है. बाय दैट टाइम उनका एज भी 30 के ऊपर क्रॉस हुआ रहता है, एक प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नीचे आया हुआ रहता है, एंड एनाटॉमी डिस्टर्ब हुई रहती है. तो मे बी वी हैव टू गो फॉर आईवीएफ ऑप्शन. तो इसीलिए नंबर्स कम मिलते हैं एम्ब्रियोज के. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंडोमेट्रियोसिस में वन ऑफ द प्रॉब्लम विच वी फेस दैट द एंडोमेट्रियम, जो भी एंडोमेट्रियम है जहाँ पे, बिकॉज जो भी एम्ब्रियोज हम लोग फॉर्म करते हैं वो यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर किए जाते हैं इन टू वेदर लाइक वी हैव अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और नॉट. बट इन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट इट्स बीन प्रूवन कि उनके एंडोमेट्रियम में प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेंस रहता है, एंड प्रोजेस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. एंड उसकी वजह अगर वो प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है तो वी गिव अ गुड सपोर्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉर एवरी लेडी. बट sadly we don't have any test to test the progesterone resistance in an endometriosis patient on the endometrium, matlab not for endometrium but for anyone. So it's very difficult to diagnose that part, and that is why the success rate is on the lower side, because as I mentioned एक quality और impure quality suffer नहीं होता है, but the implantation part may be getting affected because, and the inflammation because of the endometriosis that also affect the gene expression in the endometrium. Okay, and because of that, implantation success is lower side in endometriosis patient compared to non-endometriosis girl. So this is like something which we always face a challenge when we are treating any couple with endometriosis. So from what you just said, so am I right when I say that early intervention and management of endometriosis would help in preserving the fertility? Yeah, absolutely. Because first of all, diagnosis of endometriosis is challenging. वो पहले important है. Whenever we have a suspect, जैसे मैंने बोला कि 3D अल्ट्रासाउंड बहुत स्किलफुल होना चाहिए. Then second thing, उनका simple symptoms है dyspareunia. We should not neglect it. Always do a pervaginal examination. And उसकी वजह से जो patients को unexplained infertility है, वो patients को diagnostic laparoscopy के लिए लेके जाना कुछ गलत बात नहीं है. एक्चुअली यूरोपियन गाइडलाइंस ने अभी बोला है कि फॉर इनफर्टिलिटी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी शुड नॉट बी ऑफर्ड. ओके, बट आई शुड वी ऑलवेज चैलेंज दिस स्टेटमेंट बिकॉज इट इज रिसेंटली पब्लिश्ड इन 2022 गाइडलाइंस में ये पब्लिश हुआ है. बट it's very difficult because this is one of the disease where superficial endometriosis is not diagnosed with MRI also, with other things also, and we may have to go for laparoscopy. अभी to give an example, 3 months पहले मैंने unexplained infertility patient का laparoscopy किया था. कुछ symptoms नहीं था. It was just like she was not conceiving and no painful intercourse, nothing was there. And when we actually did, उसका जो ट्यूब्स है ना वो पूरा चिपक गया था एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट की वजह से. एंड शी वाज हैविंग डिपॉजिट्स ऑन द यूट्रोसैक्रल पेल्विस में. जब वो ट्रीट हम लोगों ने उसको किया, नाउ शी कंसीव्ड विद IUI. Okay, so these are things where early intervention is very important. Second early intervention we always follow, if at all when we are doing a surgery for endometriosis, either a proven endometriosis है जहाँ पे उनका AMH कम हुआ है, ovarian endometrioma है, and we have to go for surgery. तो वो पेशेंट में हम लोग PRP करते हैं, मतलब endometrioma रिमूव करने के बाद we infuse something called as PRP. So PRP में क्या होता है, 20 ml blood of that lady will be taken, प्रोसेस किया जाता है, and उसका PRP करके घटक है वो उसका बाहर किया जाता है, and that PRP contains lot of growth hormones. तो उसकी वजह से एमएच नहीं बढ़ता है, but apparent follicle count बढ़ता है. मतलब जो फॉलिकल्स प्रॉपर मैच्योर्ड एग देने चाहिए, या फिर जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देने वाले आगे जाके IVF की स्टिमुलेशन इंजेक्शन से, उसका रिस्पॉन्स इसमें बढ़ जाता है. एंड दैट एक्ट्स वंडरफुली. इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks टू एक्ट, एंड उसकी वजह से हम लोग उनका फोर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका एक नंबर कम होता है. बिकॉज एनी सर्जरी ऑन द ओवरी, इट बी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, एनी अदर थिंग, डिक्रीजेस योर ओवेरियन रिजर्व. बिकॉज जो भी फॉलिकल्स है दैट इज लाइन बाय कॉर्टेक्स, एंड एंडोमेट्रियोमा है वो कॉर्टेक्स को ही चिपकता है.
तो जब भी हम लोग वो Correct. निकालते हैं नॉर्मल फॉलिकल्स का भी बहुत सारा रिमूवल हो जाता है. तो एट द एंड ऑफ द सर्जरी वी ऑलवेज डू अ PRP एंड उसकी वजह से उनका आउटकम है, फर्टिलिटी आउटकम वो इम्प्रूव होने का चांस रहता है. ऑब्वियसली स्टडीज ऑन आइदर साइड, 50% of the time they may benefit, 50% of them they won't get benefit, but it won't cause any harm. So this is the way to increase their fertility potential after surgery. That's a good tip. Probably people looking for it can speak to their doctors about this particular thing, PRP. And so with time, are there any advancements in medical research or technology that have come up to improve the fertility outcomes? Yeah. Like you just said, PRP. Mention about ovarian rejuvenation. One of the therapy during laparoscopy, because there is always a dilemma, surgery first or IVF first. Because क्या होता है कि सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद एंडोमेट्रियम निकालने के टाइम पे ओवरियन रिजर्व कम होता है. So we always do AMH before doing surgery, and we always tell our client proactively that after the surgery the AMH going to fall. It's not because of the technique of the surgery. We will always take care that unnecessarily coagulation वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए. जो भी principles of endometrial surgery है जहाँ पे मिनिमल ट्रॉमा होना चाहिए ओवरियन कॉर्टेक्स को, वो लेके ही हम लोग सर्जरी करते हैं. बट ऑब्वियसली हम लोग को ध्यान भी देना है कि उसका रिकरेंस नहीं होना चाहिए. तो उसकी वजह always tell them that this is the possibility that ovarian reserve comes down, and इसीलिए वो डायलेमा रहता है कि पहले सर्जरी किया तो AMH कम हो जाएगा, फिर रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी विल कम डाउन. बट वो नहीं किया तो इट्स नॉट अलाउइंग द फॉलिकल टू ग्रो. तो ये डायलेमा में इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच. मतलब यंग फीमेल है विद गुड AMH, ऑलवेज सर्जरी फर्स्ट, बिकॉज वो निकाला तो शी इज हैविंग बेटर चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन. बट व्हेन इट कम्स टू एडवांस एज जहाँ पे एंडोमेट्रियोमा ऑलरेडी है एंड उनका AMH बहुत कम है, तो अगर मैं सर्जरी पहले करती हूँ तो उसकी वजह से उनका एक रिजर्व कम आ जाता है. तो इसीलिए मुझे कभी कभी IVF फर्स्ट टाइम करना पड़ता है. सर्जरी में व्हाट आर द एडवांटेजेस विच इज देयर, स्क्लेरोथेरेपी करके एक आया है. तो स्क्लेरोथेरेपी में जो भी एंडोमेट्रियोमा है उसका मतलब एंडोमेट्रियम निकाला जाएगा, उसका सिस्ट वॉल है उसको इरिगेशन करते हैं, नॉर्मल सेलाइन से प्रॉपर वॉश करते हैं, एंड स्क्लेरोथेरेपी एजेंट है वो मिक्स विद नॉर्मल सेलाइन अंदर पुश करते हैं, एंड वी हैव टू कीप इट देयर, एंड इट हैज टू बी डन विद ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड. सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड से ही वी हैव टू गो इन द एंडोमेट्रियोमा. वो नीडल से पहले एंडोमेट्रियम पूरा एस्पिरेट करना है, उसको थोड़ा वॉश देना है नॉर्मल सेलाइन से, और वो स्क्लेरोथेरेपी एजेंट है वो अंदर फिलअप करना है एंडोमेट्रियम. वी हैव टू वेट देयर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes, एंड बाद में वो एजेंट है पूरा वापस एस्पिरेट करना है, नॉर्मल सेलाइन का वॉश देना है. उसकी वजह से एंडोमेट्रियोमा का मतलब पूरा वो निकल जाएगा, बट ओवरियन रिजर्व है वो ड्रास्टिकली फॉल नहीं होगा. ओके, एंड दे विल बी हैविंग चांस व्हेन वी आर टेकिंग देम फॉर इनफर्टिलिटी चैलेंजेस. सैडली अबाउट मेडिकल थेरेपी, जो भी मेडिसिन अवेलेबल है वो अगर हम लोग देते हैं तो उससे प्रेगनेंसी नहीं रुकता है. बिकॉज टू गेट अ गुड प्रेगनेंसी, मतलब अगर स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हम लोग को चाहिए या सिंपल ट्रीटमेंट जैसे IVF वगैरह हम लोग को करना है, तो उसमें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट में मेनली एस्ट्रोडियोल लेवल, मतलब एस्ट्रोजन लेवल कम करने का मेडिसिन रहता है, अंदर एंडोमेट्रियम का लाइनिंग कम होने का मेडिसिन रहता है, विच इज नॉट अलाउइंग द प्रेगनेंसी टू हैपन. ओवुलेशन ही नहीं होता है, द साइकिल्स बिकम अनओवुलेटरी विद द मेडिसिन विच इज अवेलेबल. Correct. तो सैडली इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब दोनों भी ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी दो और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ा. तो इसीलिए एवरी ट्रीटमेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. तो इफ देयर इज रिसेंट एडवांसेस कि हाँ 100% एंडोमेट्रियोसिस के लिए बेनिफिट होगा, सैडली इट्स नॉट देयर. मतलब वी कैन जस्ट, So there is still a long way to go. Yeah, definitely. Yeah. So like if a woman comes to you with endometriosis, what is the advice that you would give, especially about their fertility, about preconception steps or precautions that they should follow to, probably conceive? Yeah. So let's talk age by age. Let's say I am seeing a married girl between early 30s, like 25 to 30 years of age, who is having symptoms, and that's why we diagnose her that she is having endometrioma. Obviously we'll discuss options about surgery and everything, but my job is to counsel her
कि endometriosis will decrease her AMH, means उनका egg reserve कम. Second thing, PRP वगैरह तो करेंगे, but this is not going to be beneficial in her long term way. Okay, so I will discuss her that once the surgery is done, then maybe we can go for something called as a fertility preserving options of egg preservation, means elective egg freezing. Okay, तो कभी क्या होता है कि obviously any young girl would not go for immediately for surgery because of the cosmetic issue thing. Then in those patients, like if they are not ready, then we go with medical therapy, जिसकी वजह से डायनोसिस इज द मेडिसिन, जहाँ पे उसका थोड़ा सा व्हाट आई कैन इंटेंसिटी कम आ जाता है. इट डजंट क्योर द डिसीज. ओके, बट उसके बाद वी कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो जहाँ पे वो आईवीएफ के थ्रू एग्स निकाल के दे कैन गो फॉर इलेक्टिव एग फ्रीजिंग. ओके, दैट इज अ ऑप्शन फॉर अनमैरिड गर्ल बिकॉज आई डोंट वांट टू सेंसिटाइज देम दैट यू हैव एंडोमेट्रियोसिस. You go for early pregnancy, early marriage, early pregnancy. She has her career. She is just now 25, 27. She has her whole career, and she should not just sacrifice her career with the fact of endometriosis. So definitely, egg freezing is a boon for a young endometrioma girl if when she is not married or planning to late marry. Or sometimes we see a couple who are married but they diagnosed with endometrioma or endometriosis, but they want to postpone their pregnancy. So then we can go for elective embryo freezing in those couples, where they can take the chance when they are actually waiting for the pregnancy, maybe 5 years down the line or 7 years down the line when they actually have. So this is one of the option for those girls, like when we are seeing in unmarried or married but not trying immediately for pregnancy. Okay, the second who have come to us with unexplained infertility, where we diagnose them on endometriosis. अगर मतलब प्रॉपर सर्जरी किया तो सिंपल IUI और सिंपल इवन स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन विल गिव देम अ प्रेगनेंसी. सो दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, जब उनका AMH कम है, एडवांस एज है, जहाँ पे मुझे पता है कि सर्जरी में करूंगी तो AMH और कम आने वाला है, एंड देन इन दैट I don't want to compromise on ovarian reserve. So I counsel her how to go for 2-3 cycles of IVF, जहाँ पे हम लोग एक निकाल के we go for ICSI, मतलब IVF प्रोसीजर की वजह से आपका एम्ब्रियो हम लोग करके रखेंगे एंड एम्ब्रियो प्रिजर्व करके रखेंगे, एंड दैट एम्ब्रियो विल यूज लेटर. तो उसके पहले मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले सर्जरी करेंगे एंड वो सर्जरी में एंडोमेट्रियोसिस पूरा नील करेंगे बिकॉज एम्ब्रियो ऑलरेडी हमारे पास प्रिजर्व है. तो बाद में ऐसा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि we have a low reserve count and then we are facing some different issues in that, because sometimes it's so low that sometimes we may have to go for option of egg donation, but very rarely. So advanced, and now though it's a disease where symptoms बहुत late आते हैं, but we diagnose it quite early with the modalities which I just mentioned. And उसमें it's better to aware them कि अगर वो AMH बहुत कम हुआ, that we may have to go for third party gamete, where nobody is willing for that. Every couple will be always thinking that they should use their own eggs for having fertility. So very less likely we come across those options. The counseling is very important because being a egg number on the lower side, we may have to go for 2-3 IVF cycles. Before embryo transfer, we have to go for freeze-all policy because we have to take the endometriosis down and then go for transfer and having a successful outcome. So these are the options which are available currently and how we tackle those options. And as you rightly mentioned that for all the girls whether they should go for fertility options, it's not that. Many times we come across a girl where for our surprise when we are doing the cesarean section we found an endometrioma. Sometimes already having endometrioma we counsel them, but we monitor their natural cycle. We tell them ki you have a very good ovarian reserve, baki you don't have any sexual dysfunction, your tubes are open, everything is good, your husband parameters are normal, so next 6 months just try have intercourse during these particular times, and they get naturally conceived. So it's not equation endometriosis equal to infertility equal to IVF. There is no equation like that. Every case we have to think it holistically, तो मतलब वो management हो जाएगा. See, I think I think like we have always said, endometriosis is a very enigmatic kind of a disease. सब लोगों में symptoms अलग आते हैं, किसी में symptoms होते ही नहीं हैं. There are no symptoms in some people. With some people, even a stage 1 can create a havoc in their life.
So it's one of the most enigmatic disease. But from what we intend to do with sessions like these is, when we know what's there, only then we are able to advocate for ourselves, and even the doctors are able to hear what we are saying. Like, इतने सालों में इतना late diagnosis क्यों होता है? Because people are not accepted to hear about complaints which probably women get. Yeah, absolutely. So that's many times मतलब painful menses, अरे सबको होता है, you may be one of them. ऐसे करके अगर मतलब if you neglect this part, then it's very difficult. All these symptoms are very important to take into consideration. मतलब exactly. पेन है उसका इंटेंसिटी पूछना बहुत important है. Whether you have to take leave from your office, whether you have to take any painkiller only, otherwise you are not able to work. ये सब parameters देखे जाते हैं. And sometimes you are an unmarried girl, you have to go for empirical treatment. जहाँ पे obviously it's very difficult to ask them to go for immediate surgery just to diagnose endometriosis. We are not doing that. Right. तो कभी empirically हम लोग medical treatment देते हैं, and अगर उनका symptoms 1 month में कम आता है, then retrospectively we tell them like, you may have been suffering from this disease, let's do MRI, because ये intervention, it's very difficult, it's a very challenging thing to counsel the patient. Exactly. They may not. Exactly, and especially in our country, it is further more difficult, and it will take a long time for people to understand that it is sometimes necessary. Yeah, just imagine somebody consulting me for having painful menses, और मैंने उसको स्कैन किया, कुछ नहीं दिखा, उसको बोला MRI कर. She'll be thinking, no, why this doctor is advising? She will just change. Exactly. So it's very, very difficult. Like, unless and until we give them what we are looking, and it has to be step by step. Never we can come to a diagnosis immediately. And endometriosis, as I mentioned, 8 साल लगता है कभी-कभी diagnose होने के लिए. It's very difficult. Many times it goes symptomless. I have seen cases जहाँ पे endometrioma in bilateral ovary 10-10 सेंटीमीटर का है, and तो भी they never had dyspareunia. मतलब कभी तो भी स्कैन किया, कुछ मास लगा, इस वजह से समझा कि एंडोमेट्रियोमा है. ऐसे भी केसेस देखे हैं. And somebody who is having just a superficial endometriosis but having lot of pain and other things, because जो endometriosis है उसका जो nerve bundle है उसमें जो nerve fibers identify है, and that gives a signal to the hypothalamus and pituitary. तो उसका हर एक का sensitivity is different. So it's very difficult to diagnose depending on the symptoms. कि ये symptom में तो बहुत ज़्यादा intensity रहेगा, कुछ symptoms में तो कुछ भी नहीं रहेगा. That's why it needs lot of clinical expertise, and have that vision that it's always in back of our mind. When we are seeing a couple, we should not miss on this. We should not miss on this, because this is one thing. If we have an early intervention, believe me, we can have a better pregnancy with endometriosis. Absolutely, because Dr. Sharayu, like you just said, nerve bundles. Now there's a new study coming up, like endometriotic tissue produces its own hormones. It also has its own nerve innervations, and which is making things more complicated. Yeah. And talking about normalizing period pain. I mean, I remember taking 4 painkillers in a day, and just to be functional, and thinking that it's normal, because that's what I was told by the doctors, that it's okay, maybe your intensity is a little higher. Yeah. So it's not easy. It's not easy at all. So early. It's not about pointing out on this thing, but yesterday I saw a client, but मतलब क्या हुआ, she is a client of secondary infertility, already एक baby है. She was just thinking of going for treatment for infertility, मतलब second baby चाहिए इसीलिए. Very mild symptoms, कभी कभी pain होता है, ऐसे types का symptoms था. And when she counsel directly egg producing capacity, मतलब AMH किया गया. AMH कम है तो counsel किया गया, your age is 35, AMH कम है, you go for infertility. She came to us, she's like, doctor, I'm not very much keen. I went for that, but obviously I need to know is this the only option? Like IVF is the only option for me for second baby. Believe me, we did her 3D ultrasound, and she was having endometrioma. And when we discussed with her everything, she was like, doctor, forget about the second baby. Just treat me, because as you mentioned, this is the physiology and this can affect me in my future. Let's go ahead with surgery. Exactly. I talk about my second baby. So your counseling and diagnosis is very, very important. And that assurance, every doctor should remember this. Like when you're counseling any couple,
take their emotions into consideration. In specifically in infertility cases, it's all about how troubled they are. It's not about only this aspect where we want to push about our IVF cases. So it's very important. We have to think holistically, not only target centric. कि नहीं IVF ही लगेगा. Hardly लगता है if early intervention is there. I wish there were more people thinking like you, because I remember when I was going through my diagnosis and treatment from one of a very popular gynecologist. I wouldn't name her, but super popular, very, very renowned. And I went to her, and the first thing she says is, Shilpa, you need to have a baby immediately. I was like, okay, all right. But again, that is something which is not happening. So she's like, you have to go for an IVF. I was like, but I don't want to go for an IVF because I'm already in so much of pain. The first thing first, I want to take care of my pain. If I'm in constant pain with such a severity of pain, how do I even think of a baby, or how would I even bring up a baby if I'm going to be like this for my rest of my life? So she's telling me, instead of telling that no, you'll be fine and blah blah blah, she's telling me, no Shilpa, at 40 I don't want you to be thinking that, oh, I should have had a baby. So IVF is the option for you. You should go for IVF. So people start pushing, and when I refused, the next time I went for a surgery, she didn't even come to see me. So that was the time when I changed my doctor. So there is some kind of an empathy which is necessary in a doctor. Not every... I was facing a girl, 0.5 AMH, endometrioma, just married for 6 months. Like, just do a surgery, we'll do your PRP. 3 months later, she conceived spontaneously, delivered also. Exactly. So it's more about counseling the person, taking care of their mental health and their pain in the first place. Treat them like a person, And so, another example I will quote. She's a doctor herself, gynecologist on top of that. And sadly, endometrioma, फिर कैसे लगता है, too much of knowledge, we keep thinking कि ऐसे होगा, वैसे होगा. Went for 2 IVF cycle where we were thinking कि नहीं पहले surgery करेंगे, देखेंगे क्या होता है. 2 IVF, 2 failed. We were like, you are a gynecologist, you are holding everything back. Just give a full stop. Do nothing. We'll see जब होगा तब होगा करके. Believe me, now she's 5 months pregnant. I don't know whether she has amazing. So amazing. It's a difference. Sometimes you have to understand your body and give some time. Nature is very great. Sometimes we feel in IVF, this patient maybe it's very difficult to conceive, but ऐसे मिल जाता है. And sometimes we think it's very simple. So always nature. But obviously there is a limit. Obviously we can't keep on holding 6 साल बैठो, 5 साल बैठो. Obviously. But it's time intervention, and this thing is very important. 100%. That makes sense. So Dr. Sharayu, so there are some associated conditions with endometriosis, like Mullerian abnormalities and PCOS. Can you just shed a little light over that? Yeah, 100%. Almost in a PCOS girl, 30% may have endometriosis. Okay, so PCOS is a hyperestrogenic condition. Hyperestrogenic क्यों रहता है? Because they have multiple eggs. मतलब जो number of AMH है, AMH का value 2.5 to 4 रहता है. In PCOS more than 5-6 जो है, उनके irregular menses रहते हैं. And because of that, ज़्यादा eggs number होने की वजह से, it's a hyperestrogenic condition. And hyperestrogenic condition, can have this problem. I'm not saying that all PCOS lady will be having this endometriosis. This is a tendency of that individual. Sadly, for science, there is no test where I can diagnose that this girl may have endometriosis in future. Right. अभी तक ऐसा कुछ genetic ऐसा कुछ study आया नहीं है जिसकी वजह से ऐसा पता चल सकता है. The second thing is PCOD and Mullerian abnormalities. If we talk about together, so Mullerian abnormalities 30% may have PCOS, and out of the 30% endometriosis also. तो कौन से Mullerian abnormalities है? जैसे हम लोग को पता है कि यूट्रस एक कैविटी है, बट वो कैविटी होने के लिए 2 हॉर्न्स साथ में आना चाहिए, एंड वो फ्यूज होके फिर यूट्रस बनता है. बट जब कभी ये प्रॉपरली होता नहीं है, दिस ऑल हैपेंस व्हेन यू आर इनसाइड द वूम.
तभी ये सब यूट्रस जब फॉर्म डेवलप होता है, वो टाइम पे अगर वो प्रॉपर फ्यूजन नहीं हुआ, अगर वो एंडोमेट्रियोसिस में फ्यूजन होने के टाइम पे एक कैविटी ही बन गई बट दूसरा है वो उसको कम्युनिकेट नहीं हो पाया, तो जो भी एंडोमेट्रियोसिस मतलब अंदर का जो ब्लड है वो बाहर डिपॉजिट होने से ऐसा हो सकता है। समटाइम्स दे मे हैव सेप्टेड यूट्रस, जहाँ पे यूट्रस के अंदर सेप्टम है उसमें ऐसे दिखता है। बाइकॉर्नेट यूट्रस मतलब वो फ्यूज ही नहीं हुआ कभी, दो यूट्रस है, उसमें ऐसा हो सकता है। सेकंड, जैसे मैंने बोला कि एक यूनिकॉर्नेट हॉर्न है, मतलब एक ही हॉर्न डेवलप हुआ है, एक ही सेगमेंट यूट्रस का डेवलप हुआ, दूसरा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसमें अंदर लाइनिंग बना है जो कि कम्युनिकेटिंग नहीं है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस है। सो मुलेरियन एब्नॉर्मलिटीज 30% of the time may have endometriosis, and one of the physiology, जैसे endometriosis के बहुत सारे physiologies explain किए हैं, but none of them is 100% proven, to be very sad. Like stem cell metaplasia है, पहले बोलते थे यूट्रस से एंडोमेट्रियल सेल बाहर आते हैं इसलिए एंडोमेट्रियोसिस होता है, but all said and done मतलब almost 10-12 theories are there, but none of them is proven. But one of the theory which was been proven previously कि जो एंडोमेट्रियोटिक सेल्स है एंडोमेट्रियम के, वो जब बाहर आते हैं ट्यूब्स के थ्रू तभी एंडोमेट्रियोसिस होता है। दैट कुड बी द कनेक्शन विद मुलेरियन एब्नॉर्मलिटी। दैट वाज बीन अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट कि ऐसा मुलेरियन एब्नॉर्मलिटी होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम बाहर शेड आउट नहीं होता है वो एक्टिवेट होने की वजह से ऐसा होता है, या कभी कभी इम्परफोरेट हाइमेन रहता है, मींस वजाइनल ओपनिंग जो ड्रेन करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, वहां पे एक हाइमेन, एंड दैट एक्ट्स लाइक अ कर्टन। तो उसमें these girls will come to us with primary amenorrhea, मतलब उनको मेंसेस नहीं स्टार्ट एट द एज ऑफ इवन 14-16 इयर्स तक मेंसेस स्टार्ट नहीं होता है, एंड वो बोलती कि नहीं मेरे पेन होता है एंड व्हेन वी डायग्नोस, तो जो हाइमेन जो कर्टन है उसी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आता है, तो उनका वजाइना, उनका यूट्रस, उनका ट्यूब्स वो सब ब्लड से भर जाता है, एंड वो अगर जब बाहर आता है पेल्विस में तब उनको एंडोमेट्रियोसिस होने का फ्यूचर में रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ दैट एंडोमेट्रियोसिस। बट अभी ये प्रॉब्लम बहुत कम देखते हैं, मतलब व्हेन आई वाज अ पीजी तभी हम लोगों ने 2-3 केसेस देखा रहेगा, बट आई हार्डली सीन इन माय लास्ट 10 इयर्स की ऐसा कोई मतलब पेशेंट ऐसे सिचुएशन आता है, बिकॉज अभी बहुत पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट हैविंग मेंसेस एट द एज ऑफ 13 इयर्स 15 इयर्स, तो बहुत जल्दी पता चलता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। बट अदरवाइज does have correlation with endometriosis, even PCOD as I mentioned, definitely. That's interesting actually. So here we come to the last question, and this is one question which was asked by one of a very good endo advocate in Kenya. Okay. So she had asked that what is the difference between endometrial hyperplasia, adenomyosis, and endometritis? So they all have to do with uterus lining. How do we differentiate them, and what are the differences or similarities in the symptoms? Okay, very nice question. Let's talk by one. So endometrial hyperplasia means जैसे मंथली मेंसेस आता है, तो मंथली मेंसेस में बिफोर ओवुलेशन अराउंड जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है इट गोज बाय 9 to 10 मिलीमीटर। आफ्टर ओवुलेशन जो जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी होने वाला है वो टाइम पे इट इज अराउंड 11 to 14 मिलीमीटर बिफोर मेंसेस तक। बट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम थिकनेस, मींस एब्नॉर्मली, मतलब अगर मैं डे 7 पे देखती हूँ तो द एंडोमेट्रियम थिकनेस इज समवेयर बिटवीन 5 to 6 मिलीमीटर। बट दोज गर्ल्स हु आर हैविंग इरेगुलर मेंसेस या फिर मेनोपॉजल, जिनका भी मेनोपॉज आने वाला है, जहाँ पे देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, और पीसीओडी गर्ल्स वेयर दे आर नॉट गेटिंग मेंसेस एवरी मंथ, 2-2, 3-3 महीने आता नहीं है, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द हाइपर एस्ट्रोजन व्हिच इज सीक्रेटेड इन देम, उसकी वजह से वो एस्ट्रोजन मतलब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो हैपेंस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जाने की वजह से वो एंडोमेट्रियल थिकनेस अननेसेसरली बढ़ जाता है। That is nothing but endometrial hyperplasia. So when endometrial thickness goes beyond the phase of menstrual cycle, जैसे मैंने बोला कि 7 days of menses 5 centimeter होना चाहिए, but तभी मुझे 14 millimeter दिख रहा है, that is abnormal. If I am seeing them on day 15 or 20 of the cycle 2 centimeter है, बहुत thick है, कभी कभी वहाँ पे cystic spaces भी दिखते हैं जहाँ पे हम लोग cystic endometrial hyperplasia बोलते हैं उसको, तभी that is abnormal. So this is a thickness of the endometrium which is not in proportion with the menstrual phase, that is endometrial hyperplasia.
Okay, but this endometrial hyperplasia mainly we see in, as I said, episode or the lady who are achieving menopause. वो फेज में दिखता है, but it has a different pathology. मतलब कभी कभी what is more worrisome, we should rule out a malignancy if she is more than 40 or 45 years of age and जिनका endometrial thickness ज्यादा है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है endometrial कैंसर का, जिनको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी है विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट टू हैविंग एंडोमेट्रियल कैंसर इन दोज पेशेंट्स. तो उसमें अगर एंडोमेट्रियल का बायोप्सी लिया जाता है एंड इट गिव्स टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और टिपिकल है, अकॉर्डिंगली उसका गाइडेंस दिया जाता है. उसका ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द एज विच आई एम लुकिंग एट. दैट इज बेसिकली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. लेट्स टॉक अबाउट एडिनोमायोसिस. एडिनोमायोसिस इज लाइक अ, मतलब हम लोग जैसे एंडोमेट्रियोसिस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्ना, मींस इट इज आउटसाइड द यूट्रस. एंडोमेट्रियोसिस, दिस इज इंटरनल एंडोमेट्रियोसिस टू इन अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. एडिनोमायोसिस मींस, तो उसमें क्या है, एंडोमेट्रियम मतलब वी नो कि यूट्रस का लाइनिंग है दैट इज विद एंडोमेट्रियम, एंड दिस एंडोमेट्रियम फॉर सम वुमेन इट गोज इन द मसल ऑफ द यूट्रस. इट मे एज above 35 years of the age, adenomyosis is 70% common. Okay, because of the repeated shedding of the endometrium, जो भी endometrium lining को trauma होता है, which is natural. Sometimes we see after pregnancies, जो भी 2-3 pregnancies होता है, उनमें भी adenomyosis after 35 years age बहुत ज़्यादा diagnosed होता है. And those who are undergone repeated curettage, मतलब abortions हुए हैं, repeated curettage हुआ है उनका, वो प्रेटिंग की वजह से they have adenomyosis. तो उसमें endometrium lining goes inside the uterus myometrium. Means myometrium is nothing but the muscle of the uterus. And की वजह से जो normally menses में changes होते हैं, वो endometrium पे act होने के बाद वो menstrual blood से बाहर आ जाएगा. But ये जो tissue है that goes on flourishing, उस पे जो inflammation है वो बढ़ जाता है and it gives a thickening of मतलब myometrium. एडिनोमायोसिस के बहुत सारे टाइप है प्रेजेंट होने के लिए. एक है जहाँ पे एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का जंक्शनल जोन है, उसका ब्रीच होता है, मतलब दैट इज नॉट इन अ, तो दैट इज वन थिंग. सेकेंड, एज आई मेंशन कि वो डिपॉजिट होते हैं तो मायोमेट्रियल सिस्ट दिखते हैं, छोटा छोटा सिस्ट दिखता है सोनोग्राफी पे, कभी कभी सनरे पैटर्न दिखता है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन बताता है, जो मसल का इन्फ्लेमेशन है दैट इज डायग्नोज. कभी कभी एक ही जगह पे, अगर सपोज क्यूरेटिंग में थोड़ा सा एक जगह पे ज्यादा क्यूरेटिंग हुआ, वहां पे अगर एडिनोमायोमा बनता है, इट कॉल्ड एज लोकल एडिनोमायोमा, जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे वो एडिनोमेटिक टिश्यू है वो एक्सिस जैसा बनाती है. सो दिस इज नथिंग बट एडिनोमायोसिस, एंड मेनली दिस गर्ल्स विल प्रेजेंट विद डिस्मेनोरिया एंड पेन इन एब्डोमेन ऑल थ्रू आउट द मेंसेस आल्सो. ओके, सो द सिम्पटम इज डिफरेंट. In endometrial hyperplasia, symptoms could be menorrhagia. I forgot to mention that. In endometrioma hyperplasia, they have thickening of endometrium. तो उनको menorrhagia रहता है. Means उनका menses से will go for 7-8 days, 10-14 days. ऐसे maximum अनओव्यूलेटरी साइकिल होता है, इसलिए उनको maximum time bleeding होता है. Adenomyosis bleeding normal ही हो सकता है, but painful menses हो सकते हैं. And sonography पे ये पता चलता है. The third thing which you ask is chronic is about endometritis. Endometritis, almost in 70% of the time, it's a chronic endometritis, and almost 70 to 80% it doesn't have any symptoms. We, as an infertility couple, consultant, we come across this endometriosis in a couple who is not able to conceive, जहाँ पे उनको हम लोग IVF की तरफ लेके जाते हैं, या कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इन्फर्टिलिटी, जहाँ पे वो पेशेंट का हिस्ट्री है कि उसको प्रीवियसली डिस्चार्ज का बहुत कंप्लेंट हुआ था, उसको पेन इन एब्डोमेन बहुत हुआ था, और कभी कभी उनके सोनोग्राफी पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज करके डायग्नोज हुआ था. उनको कंप्लेंट्स रहता है कि पीवी स्पॉटिंग बीच में ही होता है, ब्लीडिंग इरेगुलर बहुत होता है. वो पेशेंट में हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली सस्पेक्ट करते हैं कि इनको एक्यूट इन्फेक्शन है, बिकॉज वजाइन का पीएच अल्टर होता रहता है एंड वजाइनल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. अगर वो इन्फेक्शंस प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुए तो दोज इन्फेक्शन गोज इनसाइड द यूट्रस और वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को इन्फेक्शन हो जाता है, वेयर दैट इन्फेक्शन बिकम्स डॉर्मेंट. वहाँ पे कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म वहाँ पे रह जाते हैं, एंड उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट एंडोमेट्रियोसिस. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस ऑन सोनोग्राफी, वेरी डिफिकल्ट. जैसे मैंने बोला कि
असिम्टोमेटिक पेशेंट्स आर 70%, तो डायग्नोज होने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है. मेनी टाइम्स हिस्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हम लोग एक अंदर देखते हैं यूट्रस के, तभी हम लोग को समझ में आता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में म्यूकोजल इडिमा है, स्ट्रॉबेरी पैटर्न है, वहाँ पे माइक्रोपॉलिप्स है. तब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट को एंडोमेट्रिटिस हो सकता है. एंड एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में एंडोमेट्रिटिस होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है. 30% चांस दे में हैव एंडोमेट्रिटिस. या समटाइम्स वी डायग्नोज दैट आल्सो कि एंडोमेट्रिटिस है, तो ये पेशेंट को कभी-कभी एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है. सो ये पेशेंट को जनरली आर ऑफ क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस. तो सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, व्हेन वी सी ऑन हिस्टोस्कोपी ये पता चलता है. या कभी-कभी हम लोग उसका बायोप्सी लेते हैं एंड ये सब्जेक्ट 138 एक टेस्ट किया जाता है उसको, एंड उसमें समझ में आता है कि ये CD138 है, पॉजिटिव है, तो शी में हैव एंडोमेट्रियोसिस. सिंपल ट्रीटमेंट रहता है. यू हैव टू जस्ट गिव एन एंटीबायोटिक कोर्स ऑफ 10 days with doxycycline and other things, so it gets settled. So and again repeat biopsy to confirm that they have out of this infection. So there are 3 different conditions. And adenomyosis, endometriosis is like sister. Your sister. Yeah. Yeah, I mean, this discussion was like pretty interesting. Just let me see, I think there is some question. Yeah, so somebody's asked, does adenomyosis along with endometriosis reduce the success rate of IVF further? Yeah, absolutely. Because as I mentioned that first of all, IVF is a number game. Adenomyosis and endometriosis both are having progesterone resistance in the endometrium. That makes implantation difficult. Plus, adenomyosis and endometriosis are having a decrease in homeobox 10 gene expression in the endometrium. तो उसकी वजह that gene is very important for implantation of embryo. वो जो embryo है वो एक्टिव होने के लिए this OXA10 gene expression is very important. ये सप्रेस रहता है endometriosis के पेशेंट में. इसीलिए ये पेशेंट को, जैसे मैंने बोला कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है हम लोग फ्रीज क्यों करते हैं, बिकॉज बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफर we either give them an option of taking the down regulation, means agonist injection, to suppress this adenomyosis, because adenomyosis का surgery is going to be very difficult unless and until उनको adenomyoma है, because यूट्रस से कितना पोर्शन तो निकालेंगे ना, अगर उसका फोकल है adenomyoma तो निकाल सकते हैं, but otherwise very difficult, तो वो suppress किया जाता है. and agonist injection like Mohite या Solitaire करके जो injection आता है, which suppress the hormone and which suppress मायोमेट्रियल, मतलब जो एडेनोमायोसिस का इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है. एंड दिस इंजेक्शन अपरेगुलेट, मींस इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस OXA10 gene expression in the endometrium, and then we can go for transferring the embryos, which improve the success. So definitely it affects the endometrial, means first of all progesterone resistance and this OXA10 gene expression, which decrease the success rate. Perfect. Absolutely wonderful conversation, Dr. Sharayu. I mean, I think this was something which would be helpful for a lot of patients who would watch this. And you have actually gone in detail about each and every question, and I'm like so happy about it. Seriously. Thank you so very much. For the couple, and they can always ask a question which you can forward to me, and then I can very well them answer and solve their queries. I'll definitely call them. I would any which ways put this video up on our Insta page. So anyone who wants to ask some questions, they can just put it. I'll tag you around Dr. Sharayu, so they'll probably the questions will be directed to you. So thank you so much for being on our show, and thanks to all the audience for supporting us as always. Thank you very much. Very grateful. Yeah. Bye. Bye. Good night, everyone. Take care.